You have a reductive view of what atheism is. It's a definition of the God that atheists are hypothetically rejecting. The divine is fundamentally unknowable. It's Not whoever. Okay. Elijah is one of the major Right. Old Testament Right. prophets. Atheists reject God, but they don't understand what they're rejecting. जॉर्डन पीटरसन को आजकल कौन नहीं जानता। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलॉसफी और थियोलॉजी के जानकार हैं, लेकिन इन सब के साथ एक बिलीवर होने के हैसियत से इनको एक डिबेट में बुलाया गया था। किसके अगेंस्ट में? 20 एथीस्ट्स। वेलकम टू माय चैनल द फिलॉसफी गाय। और आज हम यही डिबेट सुनेंगे, रिएक्ट करेंगे, कमेंट्री करेंगे, अपनी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे एक ऐसा एवरग्रीन क्वेश्चन जो हमारे दिल की गहराइयों में कहीं दफन है, लेकिन एक खट्टी डकार की तरह बार बार ऊपर आता रहता है। Does God exist or not? I think that you have a reductive view of what atheism is. You've defined religion so broadly to include any sort of having aim in life, any sort of cultural archetypes, or having a metaphorical substrate. And atheism to you is a very specific type of like three people in the world that are these Raskolnikov type of, they want to get away with a perfect murder. It seems like you have the reductive view of what an atheist is. I think before anything we should pause and acknowledge कि ये कितना खूबसूरत opening statement था, because it essentially captures the disparity that atheists have with believers, which is that the concerning question is not whether God exists in howsoever manner you'd want to define God to be, but whether he exists in the relevant sense. भाई गॉड तो एक शब्द है, इस शब्द से आप जिस नोशन को रेफर कर रहे हो क्या वो रेलेवेंट है? By the term God, if you're referring to something that encompasses a creator, maximally greatest being, ye pen, ye mic, and then you ask, do you believe in God? Well, even if someone does not believe in a creator or maximally greatest being, just because he believes in this pen, he would say, yes, I believe in God, and that would serve nothing at all because you would still continue sharing the differences. सेम गोज विथ रिलीजन। अगर आप रिलीजन को डिफाइन ही इस ढंग से कर रहे हो कि रिलीजियस एक्ट्स आर दोज एक्ट्स दैट आर ए थॉटफुल, तो दिन में 99% ऑफ द चीज़ें दैट वी डू दे आर ए थॉटफुल, इंक्लूडिंग द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, ब्रशिंग आवर टीथ। Well, let's start with your claim. How do you define the God that you're rejecting? I think the average Christian believer, when they say that they're Christian and they believe, they mean some sort of God that is all-powerful, all-perfect, is somehow involved in the matters of this world, and that we look to them through wisdom and with Logos incarnate in Christ. I think atheist ने ये बहुत अच्छे से clear कर दिया है that whatever he is referring to, that thing participates in our day-to-day lives, as opposed to being a notion that is so alienated. Keep that in mind. God rewards Moses with a glimpse of the divine. So this is a definition of the God that atheists are hypothetically rejecting. So despite the fact that Moses is a stellar character and he's had a long and difficult life and can withstand a lot of difficulty and travail, God puts him between two cliffs. So he can just see a crack of what's in front of him. And when God walks by, he allows him to see his back. Okay, so the implication of that story is that the divine is fundamentally unknowable. Okay, so I have three concerns. My first concern essentially sprouts from this thought experiment called Gardner's thought experiment, given to us by this guy called John Wisdom. नाम में ही wisdom है, क्या बात है, क्या बात है। तो एक अतरंगी ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। वही पुराने वाले दो कैरेक्टर्स हैं हमारे, संता और बंता। संता और बंता हैव अ फार्म हाउस। भूख लगती है तो बाहर जाते हैं खाने के लिए, समोसा खा के जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो ट्रिम हो चुके हैं। तो संता कहता है कि यहाँ पे एक गार्डनर है, माली। तो बंता कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई हमारा ही फार्म हाउस है, हमको पता है हमने किसको हायर किया किसको नहीं, यहाँ पे कोई गार्डनर नहीं है। संता कहता है नहीं नहीं है गार्डनर यहाँ पे। बंता कहता है नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। 10 मिनट बैठ के देख लेते हैं, अगर गार्डनर होगा तो वो यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, इवेंचुअली कभी ना कभी हमको दिख ही जाएगा, तो पता लग जाएगा गार्डनर है या नहीं। तो बैठ के ये लोग 10 मिनट देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 10 मिनट्स इनको कोई नहीं दिखाई देता है। तो बंता कहता है देखो गार्डनर नहीं है। संता कहता है नहीं नहीं नहीं, गार्डनर ज़रूर है, बस वो सुनाई नहीं देता। तो बंता कहता है चलो एक और तरीका है टेस्ट करने का, अब की बार आंखें बंद करके बस कान से सुनेंगे हम लोग, अगर गार्डनर होगा तो कहीं ना कहीं से झाड़ियों की आवाज़ आ जाएगी, तो पता लग जाएगा गार्डनर है या नहीं। तो बैठ के ये लोग 10 मिनट सुनते हैं। बाय द एंड ऑफ 10 मिनट्स उनको कुछ सुनाई नहीं देता।
तो बंता कहता है देखो गार्डनर नहीं है। संता कहता है नहीं नहीं नहीं, गार्डनर ज़रूर है, बस वो दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता। बंता कहता है ठीक है चलो लास्ट ट्राई, हमारे पास डॉग्स हैं, हम डॉग्स को खुला छोड़ देते हैं, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, दे विल बी एबल टू स्पॉट द गार्डनर। तो डॉग्स को खुला छोड़ते हैं, बाय द एंड ऑफ 10 मिनट्स डॉग पूरा सर्कल मार के विदाउट स्पॉटिंग एनी वन आउट वापस आ जाते हैं। तो बंता कहता है कि देखो भाई गार्डनर नहीं है। तो संता कहता है नहीं 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 नहीं, गार्डनर तो है, बस वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता और स्मेल नहीं करता। तो बंता कहता है भाई साहब, डोंट यू थिंक दैट वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, वी आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। भाई मैं बोल रहा हूँ कि गार्डनर नहीं है, आप बोल रहे हो गार्डनर है, लेकिन कुछ इस ढंग से है कि वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, स्मेल नहीं करता। जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स, दैट डज नॉट मीन दैट वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट थिंग्स, वी आर एसेंशियली एग्रीइंग। नाउ एक्सटेंड दिस टू अ डिबेट ऑफ गॉड। ठीक है, एथीस्ट कह रहा है कि गॉड नहीं है, बिलीवर कह रहा है कि गॉड है लेकिन वो अननोएबल है। How are we so sure that they're actually talking about two different things? If you want to argue against this, what you can essentially say is कि believer ये कह रहा है कि God is unknowable. He's not saying that God is indiscernible. We cannot know what God is, but we can know that God is. And what God is not the only means to know that God is. Rewind करके फिर से सुनो मैंने क्या कहा। तो कहने का ये मतलब है इसी ढंग से डायलेक्टिक में डायलेक्टिक कॉन्वर्जेशंस आगे बढ़ती हैं। इनफैक्ट आई इंसिस्ट कि आप भी पार्टिसिपेट करो, कमेंट सेक्शन आपका है। खैर, द सेकेंड कंसर्न इज जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू डिफाइन समथिंग दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव मेड एनी कमेंट ऑन दैट थिंग्स एग्जिस्टेंस। यू आर वेरी वेल एबल टू डिफाइन वॉट अ यूनिकॉर्न इज, अ हॉर्स विद अ हॉर्न, but that has nothing to do with whether unicorn exists, right? सोचो जरा ये, it only means that if unicorns exist, what would essentially exist is a horse with a horn, है ना? so पीटरसन ने ये कह के कि देखो इस बुक में गॉड इस ढंग से डिफाइंड है, कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ लिया। he still has the onus to prove that that particular thing exists. The third concern that I have, it's just an extension of the second one, that the onus is not just to prove the existence, but it is to prove the existence in the relevant way. भाई आप एक यूनिकॉर्न को कंसीव कर पा रहे हो, होपफुली आप कर ही पा रहे हो, क्या ही लगता है कंसीव करने में, घोड़ा है उसके ऊपर हॉर्न है, बस बात खत्म। नहीं कर पा रहे हो तो छोटा भीम का एक एपिसोड है। खैर, सपोजिंग कि आप कर पा रहे हो, सो इट सर्टेनली एग्जिस्ट्स इन वन वे. It definitely exists in a set of your thoughts. But the question is not whether unicorns exist in set of your thoughts, but whether unicorns exist out there like a horse. I feel like you're getting at this idea of polysemy, where we have multiple related meanings for a word, right? Like, for example, a famous painting can be emotionally moving in that it changes my emotional state. And when I was on the highway coming here to the studio, I was physically moving. I was changing my position. If I said, I believe the Mona Lisa is very moving, and you said, you don't really understand what you're saying, it's nailed to the wall, I would say that you're the one who doesn't understand what I'm saying, not the other way around. And the way that relates to this is there are many concepts of God, and I'll admit I find a lot of what you say about that interesting. I'm familiar with it. The idea of this kind of Jungian hierarchical thing, or as a metaphor or a symbol, or the kind of, atheist, materialist, literalist idea of a agentic, omnipotent, omniscient being that intervenes in reality. देखो इस वाले एथीस्ट ने भी ये क्लियर किया है कि द नोशन दैट इज रेफरिंग टू इट्स नॉट एन एलियनेटेड नोशन. ये बस क्रिएटर की बात नहीं कर रहा है, ये क्रिएटर की बात कर रहा है जो ये भी कहता है कि आप किसी की बलि चढ़ाओ तभी आपका डिवोशन जो है वो प्रूव होगा, या फिर अगर आप 7 चक्कर घूम रहे हो तभी आपकी शादी संपन्न होगी. सो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ गॉड दैट इज बेसिकली आउट देयर इन द पॉप कल्चर, that is understood to be governing us in manners that we would pray to him and things would happen and so on and so forth. When I'm saying that I reject the concept of God, I'm aware
of these other definitions of God. But I think that when we use words, we tend to only imply one meaning at a time. So the same way that I would say the Mona Lisa is moving emotionally, but I would not say it's moving physically. I would say I reject the concept of God in this very literal way. So before going ahead, let's pause and acknowledge कि इसने इतने बेहतरीन ढंग से आर्टिकुलेट किया है जो मैं इतनी देर से बक रहा था. What is it that you think guides you when you're talking to me to help you determine whether what you say is true? Logic, memory, reasoning, sensory information. How do you distinguish that from being governed by something that's false? Okay, so I must appreciate Peterson's communication skills for basically getting the other person to where he wants that person to come at, which is to basically spitting conscience. Is a psychologist supposed to be a good psychologist, so nothing less is expected of him anyway? An interesting question. How do you know the difference when you speak between what's true and what's false? So you could imagine I infer, right? I can infer. I can. From what principles? So, and what are you getting at? I'm getting at the fact that your conscience guides you. Is that reasonable? Conscience is defined by Conscience. my empathy and my reason are my foundational. Define it any way you want. Okay, so that's how I'm defining my conscience. Is my my conscience is my sense of Right and wrong. Yeah, exactly. Yes. Yeah, Where does that come from? I would say that comes from an evolved capacity to empathize and a recognition of the benefits of engaging with and nurturing that capacity. And then that empathy is constrained and guided by reason, right? Like, for example, I am driving down the highway, there's a kitten in the road. I'm going to empathetically feel, oh my God, I want to save the kitten. But then reasonably, like, I'm going to get hit by a car, right? So that's sort of the process through which I make ethical decisions. See, this guy is very adamant on defining conscience through physicalist terms. And Peterson is doing all his best to basically get him to realize that conscience is not physical. Well, it is metaphysical. But just because it is metaphysical, does it mean that it is divine? So Elijah, the prophet Elijah, defined God in the Old Testament as the voice of conscience within. It's not whoever. Okay. Elijah is one of the major All right. Old Testament All right. prophets. All right. He's equal in stature to Moses. Okay. Right. So it's not arbitrary. All right. So that is interesting, but it's not relevant to the context with which I am using the term God. I was kind of waiting कि कब ये बंदा bluntly बोलेगा कि बॉस आप जिस चीज़ को रेफर कर रहे हो by the term God, मैं उस चीज़ को रेफर नहीं कर रहा हूँ. And since you are remarking something about me that I don't understand what I'm rejecting, so you should come to my terms. It's directly relevant. Atheists reject God, but they don't understand what they're rejecting. What? Did he just do that? It's like someone saying कि मम्मी मैंने खाना खा लिया है, मम्मी saying कि नहीं बेटा तुमने नहीं खाया है. अरे वो बताएगा ना उसने खाना खाया है कि नहीं. Like, honestly, this was not expected from Peterson. So basically, we've got the crux of this segment of the video. So I think we can stop. अगर आप दूसरे segment पे मेरी commentary सुनना चाहोगे तो comment करके बताओ, वरना फिर किसी वीडियो में मिलते हैं एक interesting से topic के बारे में बात करने के लिए.